Good morning, everyone. This is our second class of income tax. So, in this class, we will understand the person is classified in the different categories in the income tax. As you can see, I have written a list of categories of a persons which is defined by the income tax. So, first one is individual, second company, third Hindu undivided family. In short, you can say HUF, and fourth one is a firm, and number fifth is the association of a person and body of individual. You can also say in short AOP and BOI, body of individual. And number six is local authorities, and last one is every artificial judicial person not falling within any of the preceding categories. If suppose if any of above categories not falling in above six categories, that comes under the seventh one. अगर कोई पर्सन इन अबाउ सिक्स, जो ऊपर के जो छः कैटेगरीज हैं, अगर इनमें से कोई भी ऊपर फिट नहीं होता है तो वो सेवन्थ कैटेगरी में आएगा. तो पर्सनस को इन सेवन कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स में, और इनकी कैलकुलेशन किस तरह होगी वो हम आगे क्लासेस में देखेंगे. सो how would be the calculation of each category will be done, we will see in the future classes. So let's them understand what these categories are in the income tax. So first one, is individuals. In individuals you will get the male, female and minor child, and the calculation of the minor child, how would be done. It is the process is given differently in the income. First one, female, male, minor child and female. So these are the these people comes under individuals. And the second one, company. So even company is also considered as a person. It is one of the category which comes under the income tax, and the calculation of the company would be shown in the income tax separately. And the next one, firm. Suppose in the firm there are the two persons who carry out one business for short period of time or long. So even the calculation of the firm is also given in the income tax. So this is our third category. And number fourth is AOP and BOI, association of a person and body of इंडिविजुअल. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, दो से ज़्यादा पार्टनरशिप में सिर्फ टू पीपल कैन रन अ बिजनेस. बट इन द केस ऑफ AOP एंड BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, में बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस को रन करते हैं. तो इनका भी किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो इनकम टैक्स में दिया गया है. व्हेन वी स्टार्ट दिस टॉपिक्स we will learn in the details, but at this time I am telling you shortly about these things. So next one is HUF is a joint family. Into undivided family is joint family, and as you know that the grandfather and grandmothers has a many children, and the income of each member is gathered with the grandfather. अब यहाँ पे मान लीजिए एक दादा दादी जो हैं और उनके काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो भी कोई अर्निंग करता है वो दादा के पास पैसे जमा करता है. तो इस केस में जो भी अर्निंग होगी वो ग्रैंडफादर के पास गैदर होगी, जमा होगी. उसका किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो इनकम टैक्स में बताया गया है. फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़. इन द लोकल अथॉरिटीज़ वी हैव द पंचायत कैलकुलेशंस. Local, these are called as it comes under the local authorities. And the second one is municipality. So these are local authorities, and how would be the calculation of these two things will be given in the income tax. And the last one is such as god, idol and deities. So these are the things which not above the six categories will be fall under the seventh category. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, अगर ऊपर सिक्स कैटेगरीज में अगर फिट नहीं होता था तो पर्सन्स को यहाँ पर गॉड, आइडल और डीएटीज़ में फिट किया गया, यहाँ पर उनको सेट किया गया, इस कैटेगरीज में डाला गया है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.